नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। गट टॉक्स के आज के वार्तालाप का जो आज का विषय है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। और हम बेहद खुशनसीब हैं कि आज हमारे साथ भारत में ख्यातनाम लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर आनंद खक्खर जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है भावनगर के ख्यातनाम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वेंकट अय्यर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक से ही जुड़े वार्तालाप की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सर, आपसे पहले जानना चाहूँगी कि लिवर ट्रांसप्लांट एक्चुअली होता क्या है? जैसे जो शब्द है लिवर ट्रांसप्लांट, इट इज़ काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि व्हेन द डिजीज्ड लिवर की जो रोगिस्ट लिवर है, व्हेन इट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स एसेंशियल फंक्शंस नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, देन उसको जो ख़राब लिवर है, डिजीज लिवर है, उसको निकाल के एक दूसरा लिवर, नया लिवर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि नया लिवर तो एक ही बार मिलता है जो भगवान देते हैं। दूसरी बार जो इंसान या डॉक्टर नया दूसरा लिवर जो लगाते हैं वो कभी नया नहीं होता। इट इज़ ऑलवेज द यूज लिवर। लेकिन वो दूसरा लिवर जो काम करता लिवर डाला जाए, वो प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। लिवर का ट्रांसप्लांटेशन दूसरे ट्रांसप्लांट से काफ़ी अलग भी होता है। जी सर, हमें बिल्कुल ये सवाल हमारे मन में उठता है कि किडनीज हमारे पास दो है, तो हमें पता है कि एक किडनी से जीवन नॉर्मली बीत सकता है, पर लिवर तो हमारे पास एक ही है। तो हमारे श्रोताओं को हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि फिर आप इसमें से ट्रांसप्लांट किस तरह करते हैं? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लिवर जैसे एक है, लेकिन फंक्शनली इट इज़ मोर देन ट्वाइस ऑफ व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स फंक्शन। तो वही काम किडनी, जैसे आपने बोला, दो किडनी मिलके करती है। तो ये लिवर जो है वो सिर्फ अवेलेबल पोर्शन में से सिर्फ 30% ही काफ़ी रहता है ज़िंदगी को सपोर्ट करने के लिए, ऑल इट्स मेटाबॉलिक फंक्शंस को सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, रिडंडेंट या एक्सेस पोर्शन अवेलेबल रहता है ह्यूमंस को, तो वी ट्राई टू टेक अ पोर्शन ऑफ दैट part of the liver and use it to transplant into a person who is suffering from end stage liver disease. लेकिन the property of the liver which is unique to liver only, and that which helps us to do this, is called the ability of the liver to regenerate itself. Fully developed, differentiated, specialized organs generally do not have the ability to replicate themselves or regenerate themselves. But liver, being the only organ of that nature in the human body, allows us to do a split transplant and it regenerates again. So 70% लिवर अगर किसी नॉर्मल इंसान का निकाल दिया जाए तो उसका मतलब कि उसके बावजूद जो बाकी 30% बचा है वो नॉर्मल साइज वापस हो जाएगा। कितने समय में हो जाएगा? It takes approximately 2 to 3 months. तो करीबन 2 से 3 महीने में जो दाता है, मतलब जैसे लाइव डोनर होता है लिवर ट्रांसप्लांट में, तो उसका लिवर नॉर्मल साइज 2 से 3 महीने के अंदर 30% से जो प्रीवियसली, not just normal, the pre-donation volume, yes. तो उस वॉल्यूम तक आ। One more thing I want to specify यहाँ पे कि even during that tenure of 2 to 3 months when it's regenerating, it is never in a state of liver failure, क्योंकि आपने जो 30% छोड़ा है ना, वो 30% नॉर्मल फंक्शंस के लिए वैसे ही काफ़ी है। तो द पेशेंट स्टेज इन द हॉस्पिटल फॉर ओनली अबाउट 5 to 7 days, और डिस्चार्ज के टाइम पे द फंक्शनिंग कैपेसिटीज एंड पैरामीटर्स ऑफ द लिवर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन द साइज इटसेल्फ बिकम्स द सेम, नॉट सिमिलर, नॉट ऑलमोस्ट द सेम एज द प्री डोनेशन। तो दाता ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल अपना नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, बाद में जाकर अपना जो भी जॉब है, अपना उसका जो काम है, वो ही कैन गो बैक टू सोसाइटी, वो बाद में वो अपना काम कर सकता है। जो पेरी ऑपरेटिव केयर होती है, दैट ग्रेजुअली रिजॉल्व्स एंड फुल फंक्शनल कैपेसिटी इज रिस्टोर्ड बाय 6 weeks आफ्टर द सर्जरी। और वो 6 weeks के बाद चाहे आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाए या डीप सी डाइविंग करने जाए, श्रीलंका के जंगल में फोटोग्राफी करने जाए, या तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करे, मैं तो बोलता हूँ वो 5 बार शादी करे और 25 बच्चे करे, तभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
So this is nature's miracle. That is what Yes. we can say. That liver has the unique ability to regenerate. So this is a very important message. Thank you for that message coming from the forum that the donors are going to be able to work perfectly normally in another 6 weeks time, which is a very short duration, I guess. सर अब आपसे जानना चाहेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए सही कैंडिडेट कौन है, किसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए? सी देखिए, जो हम लिवर फिजिशियंस हैं, तो सर्जन है, तो मोस्टली लिवर फिजिशियंस जो सर्जन के पास जो कैंडिडेट्स है, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को स्क्रीन करके फिर उनको ट्रांसप्लांटेशन की जिनको ज़रूरत है उनको सर्जन के पास भेजते हैं। तो इसमें मेनली जो बल्क होता है वो होता है सिरोसिस। तो सिरोसिस हम जानते हैं कि लिवर एंड स्टेज लिवर फेलियर को सिरोसिस कहते हैं। अब उसके अलग अलग कारण होते हैं, जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, जो अतिशय मोटापा जो अभी बढ़ रहा है समाज में, तो अतिशय मोटापे के कारण लिवर जो खराब होता है। कुछ वायरसेस हैं जैसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इसके कारण लिवर लंबे अरसे के इन्फेक्शन के कारण लिवर खराब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों में 2-3 चीज़ होती है। अगर जैसे कि अगर पेट में पानी भरना, जिसको हम हिंदी में जलोदर कहते हैं, तो पेट में पानी भरता है तो वो ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा जा सकता है उसके बारे में। फिर अगर उसको खून की उल्टी हुई, तो खून की उल्टी हुई वो कैसे होती है लिवर के पेशेंट में कि उसमें खून की नसें फूल जाती है और लिवर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और उसके कारण खून की उल्टी होती है। और यदि एंडोस्कोपी से उसका इनिशियल कंट्रोल आ सकता है, पर अगर ये बार बार हो तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही है, लिवर ट्रांसप्लांट। फिर लिवर सिरोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन है कि दिमाग पे असर होना। तो हम सुनते हैं कि ये पेशेंट को लिवर फेल हो गया और वो बेहोश हो गया। तो ये जो पेशेंट है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एनकेफ्लोपैथी, तो अगर एनकेफ्लोपैथी में पेशेंट बार बार जा रहा है तो उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट ज़रूरी है। तो ये पहला कैटेगरी है सिरोसिस, कि जिसमें पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो फिर उसको ट्रांसप्लांट के लिए रेफ़र किया जाता है। दूसरा, सिरोसिस लंबे टाइम तक रहे तो लिवर में कैंसर भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं कार्सिनोमा। तो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, लिवर में कैंसर होता है। तो अर्ली स्टेज में कुछ कैंडिडेट्स में ट्रांसप्लांटेशन जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन है। फिर एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं कि एक्यूट लिवर फेलियर, कि लिवर अचानक से, नॉर्मल लिवर जो होता है, किसी लिवर पे कोई इंसल्ट आया, मतलब कि जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, कोई दवाई ले ली जिसका असर लिवर पे हुआ, तो उसके कारण अगर लिवर बिल्कुल काम करना बंद कर देता है तो उसको बोलते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। तो इसमें जनरली पेशेंट सडनली बहुत सिक हो जाता है, मतलब कि एकदम नॉर्मल मरीज़ होगा, 2-3 दिन के अंदर उसको जॉन्डिस हुआ और बिल्कुल बेहोश हो गया। और ऐसे पेशेंट को उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट होता है लिवर ट्रांसप्लांट। दवाइयों से ट्रीटमेंट हो सकता है, पर उसका रिजल्ट होता है कि 100 में से करीबन 10 से 20% लोग बच पाते हैं ऐसे कंडीशन से, मगर लिवर ट्रांसप्लांट उनको 90% सर्वाइवल चांस देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये सारे कैंडिडेट्स हैं लिवर ट्रांसप्लांट के। और भी कई हैं, जैसे ट्रांसप्लांट अगर फेल होता है तो फिर दूसरा लिवर उसको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे और कुछ रेयर बीमारियां हैं कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ ट्रांसप्लांट इलाज है। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं, पर जो ज़्यादातर पेशेंट हैं लिवर फेलियर, सिरोसिस और लिवर कैंसर, इस कारण से ऑपरेट होते हैं। बहुत अच्छा आपने हमें समझाया, पर मुद्दे की बात मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि अगर हम ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को प्रेफर करना चाहते हैं तो आई थिंक आपको ये स्ट्रेस करना कितना ज़रूरी है कि बहुत देर तक इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि मुझे लगता है सर का एक्सपीरियंस भी होगा कि बहुत सिक पेशेंट्स आते हैं तो इतना बेहतरीन ट्रांसप्लांट करने के बाद भी सर्वाइवल जो है वो इतना नहीं हो पाता है। तो आई थिंक द पॉइंट टू बी ड्रिवन होम इज़ दैट इट शुड बी ऑन टाइम। सिरोसिस इतना बुरा ना हो कि पेशेंट ऑलरेडी बहुत ही बुरी सिचुएशन में है और आप उसको वहाँ भेजें। तो पेशेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो वक्त पे ट्रांसप्लांट सर्जन का कांटेक्ट करें, उनका स्क्रीनिंग हो, क्योंकि अभी भी ऑर्गन वेटिंग पीरियड काफ़ी होता है इंडिया में स्पेसिफिकली, और लाइव डोनर मैच मिलना भी शायद मुश्किल है। तो सर इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी देंगे? यू हैव ऑलरेडी राइटली इलैबोरेटेड के द डिग्री ऑफ सिकनेस, आदमी जितना बीमार होता है उसी तरीके से या टू द सेम प्रोपोर्शन
they suffer from peri-operative complications, and that directly impacts on the eventual outcome. So, जैसे साहब ने बोला ना, there is a stage during which transplant can be avoided and the disease can be treated medically. But there comes a stage when the functioning organ fails to compensate for the damage. Exactly. And that is when you start showing signs of liver failure. So the first sign of liver failure alerts you to the possibility that you will need a transplant. And it is at that point in time that the potential patient should be seen by the transplant center and the transplant surgeon. Sorry. Because every patient has a different set of challenges. Some people are young, some patients are elderly, some have diabetics, some have heart disease, some have kidney disease. So it is depending upon the constellation of sicknesses, including age, that has the potential to impact on the patient's surgery as well as outcome. And that prerogative or that right, probably it is best to allow the transplant surgeon to have. And it is from that perspective that I say that the first sign of liver failure, be it, जैसे साहब ने बोला, ascites, पाँव में सूजन, encephalopathy, खून की उल्टी होना, मोशन में खून होना, ये कोई भी निशानी हो जो लिवर फेलियर की निशानी है एक तरह से, तो वो जब पहली बार आती है तो he should see a transplant center. So I think this is a point rightly driven home कि वक्त पे अगर सब तैयारी शुरू हो तो आउटकम्स बहुत ही सुंदर होते हैं. नतीजे सर तो काफ़ी सारे जो पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं उनके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं और उनका कहना है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक नॉर्मल मरीज़ की तरह ही होती है अगर वो थोड़ी सी एहतियात बरतते हैं तो. सर तो पोटेंशियल रेसिपिएंट और पोटेंशियल डोनर उनको आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि उसमें आपको जिस तरह आपने हमें बताया एक टेलर मेड अप्रोच बनाना पड़ता है क्योंकि हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट हर डोनर की रिक्वायरमेंट अलग होती है. तो आप किस तरह हमें संक्षिप्त में बताएंगे कि किस तरह उनकी स्क्रीनिंग होती है और उनको किस तरह प्रिपेयर करते हैं आप? You are a very smart questioner. You already give the answer in the question. So like you said, every patient's solution has to be tailor-made for the patient, and that is obviously in keeping with the physical, physiological and pathological comorbidities associated with the individual and the disease. But this is the broad concept. You know, इसमें दो milestones मैं बताना चाहूँगा. One is that the patient, potential patient, has to be evaluated for fitness of every other system which is going to play a role in the transplantation of his liver. ट्रांसप्लांट तो हम लिवर का करेंगे, लेकिन जो ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव होगा उसकी वजह से हार्ट की एक फिटनेस लेवल होना चाहिए, इजेक्शन फ्रैक्शन होना चाहिए, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट ऑपरेशन भी काफी स्ट्रेसफुल होना. हाँ, तो मतलब कितना आप कितना 10 घंटे 12 घंटे, सो 12 घंटे का ऑपरेशन झेल पाना चाहिए. उसमें क्या है कि जो खून की सबसे बड़ी नस होती है बॉडी की, इंफीरियर वेना केवा, उसको क्लैम्प किया जाता है 1 घंटे के लिए, कोई खून पहुंचता नहीं हार्ट को. तो इज द हार्ट केपेबल ऑफ टेकिंग दैट स्ट्रेस? What are the lung reserves? Is he going to face additional challenges in ventilating that patient? Is it going to be feasible to extubate him? What is his nutrition status? ये सब parameters tell you the proportion of risk associated with every individual's transplant, and that risk has to be optimized. I mean, you cannot take a patient who has 60% risk of dying during the surgery. You have to bring that risk down to around 10%, and you have to be able to provide 90% or higher possibility of success to the patient. So one is evaluation. दूसरा है preparation. जैसे मैंने आपको बोला, आप जो है आप हेल्दी हो, आप 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ सकते हो, लेकिन आप क्या कल दौड़ सकते हो? कल नहीं दौड़ सकते. तो आपको जो है 10-15 दिन के लिए मुझे जैसे ट्रेन करना पड़ेगा, आपका डाइट, आपकी एक्सरसाइज, आपका एक रूटीन बदल जाएगा. तो उस हिसाब से पेशेंट का भी सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, वाटर रेस्ट्रिक्शन, certain calorie wise nutritional optimization, certain physiotherapy in the form of isometric limb and girdle exercises. I prepare your chest wall muscles with incentive spirometry. So these are the typical protocols which will allow us to first evaluate and deem fit, to prepare, to optimize results.
सर हम थोड़ा सा डिजीज्ड डोनर ट्रांसप्लांट के बारे में भी जानना चाहेंगे। हमने लाइव डोनर का तो आई थिंक काफ़ी डिस्कशन कर लिया है, तो डिजीज डोनर अगर हमें मिल जाता है तो उसके क्या एडवांटेजेस रहेंगे, हमें क्या एडवांटेजेस रहेंगे, मीन्स एज अ सर्जन आप किस तरह ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे और पेशेंट के लिए उसके क्या फ़ायदे रहेंगे? So, the biggest benefit of a diseased donor or cadaver donor, as they say, or a brain dead donor, as we normally use, is that you don't need a live donor. You don't need to subject a perfectly healthy person who does not need surgery for themselves. उनको आप ये सर्जरी के टाल सकते हैं उनके लिए unnecessary सर्जरी. अब सर्जरी क्या है? सर्जरी एक सर्जरी हैज़ एन इनहेरेंट सेट ऑफ रिस्क. अगर आप गाड़ी चलाते हैं यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं तो आपने तो 1000 बार किया होगा, लेकिन फिर भी इज इट कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ रिस्क? नो, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ड्राइवर, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कार, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द वेदर. Things can go wrong just because you do it a certain number of times. So you're trying to say that although there is the donor risk is minimal, yes, it is there. Yes. सर हम ये जानना चाहेंगे कि इसके लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, क्योंकि अभी भी हमारे जो भारत में लोग डरते हैं डोनर बनने से, थोड़ी झिझक तो रहती है, चाहे वो अपने रिलेटिव को ही डोनेट कर रहे हैं. तो ज़्यादातर मरीज़ अगर जब भी आप ट्रांसप्लांट एक्सप्लेन करते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री में जल्दी से रजिस्टर करना होता है. दे आर इन अ हरी फॉर अ डिजीज लिवर टू बी अवेलेबल टू देम, बट दे आर नॉट रेडी फॉर अ लाइव डोनर ट्रांसप्लांट. सो आपकी राय क्या होगी कि लीगैलिटीज़ किस में ज़्यादा संभली हुई है और लीगल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? So diseased donor liver transplant and living donor liver transplant are two completely different scenarios. And yes, there are legalities involved in both of them. But in the case of diseased donor liver transplant, the only essential or difficult kind of a paperwork you would need, and that too we are talking about Gujarat, in the context of Gujarat state, the only kind of paperwork needed is a domicile certificate. Okay. And if you talk about the rest of the country, probably Gujarat is the only state that asks for a domicile certificate. The rest of the states don't ask for a domicile certificate. They do not differentiate whether the patient is from Gujarat or from. He has to be citizen of India. Citizen of India, but for Gujaratis, I think citizen of Gujarat is more important than citizen of India. But other than that, a diseased donor liver transplant requires no paperwork. Okay. When it comes to living donor liver transplantation, and I think it is extremely important that we establish the relationship between the donor and the recipient, the patient. We willy-nilly, unknowingly, unwittingly would never ever want to be a part of a organ trade. Okay, organ donation has to essentially remain donation. It cannot be in exchange of finances or goodies. So we are not encouraging the barter system as all. As doctors, patients are always a priority, and they always have been our priority. So the paperwork is in context to that establishment of the relationship. There are biological tests, including the HLA test, which make the process simple. But other than that, So who in India is allowed to donate, like in live donor? Yes. Is it say wife, kids, parents? Yeah. And first cousin, second cousin. So how far? Right. So law is what you interpret the written line, right? So the Transplantation of Human Organs Act, THOA, has passed by the Indian Parliament in 1994 and then updated in 2011 and 13 and 14. Allows the donors to be categorized into two. One are related and the second is unrelated. What you mentioned are related donors, and that includes mother, father, son, daughter, brother, sister, spouse and grandparents. And the rest, whether it is first cousin, whether it is the second cousin, whether it is your neighbor, whether it is your driver, or whether it is somebody you have never seen his face, are all unrelated. And this is how the THOA lays it out, and it is for each individual state to adopt the Central Government Act and convert it into a standard operating procedure, which they called GR in Gujarat and GO, say in Tamil Nadu, government orders versus government regulations. So the GR of Gujarat government, for instance, further sort of clarifies
and the related donors, as we said, are considered as first degree relatives. And the unrelated are categorized into distant related and unrelated unrelated. So generally the institutional ethical committees are allowed to pass suo motu their primary or first degree relatives, and the second degree or distant relatives as well as unrelated cases have to go to the state ethical committee for approval. Okay. And the state ethical committee, I have never seen approve unrelated donors. Okay. So they what- only approve the distant related donors. Okay. So this is the legality, the policy, Right. the written word and the implemented truth. सर अब मैं आपसे सबसे मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ. अब तक के आंसर्स तो आपने बहुत फट से दे दिए, पर कॉस्ट एक्चुअली टू द पेशेंट ऑलमोस्ट उनको कितना प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है रफली, नॉट प्रिसाइज फिगर्स, और उनका पर मंथ कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट क्या होता है, बिकॉज दे रिक्वायर लॉट ऑफ I will मेडिसिन. just give a suggestion. You divide this answer into pre-transplant, actual procedure, and in the post-transplant life. How we are not asking for a one figure. We are just asking for something around about. Right. बस मरीज जब भी हमारे पास आते हैं उनका फर्स्ट कंसर्न यही होता है कि हाउ शुड दे स्टार्ट मैनेजिंग देयर फिनेंसेस व्हेन इट कम्स टू एनी ट्रांसप्लांट फॉर दैट मैटर. So these are the fundamental requirements of life: money, access to healthcare, and you should never have any hesitation in asking your, imagine that would be difficult for me. Because if truth was difficult for me, then I shouldn't be alive. Okay. So the treatment of chronic liver disease or treatment of or management of patients with end-stage liver disease awaiting transplant is not quotable, because it depends on the comorbidities and the manner in which the chronic liver disease has decompensated. Somebody who has ascites frequently needs an ascites tap every week, Yeah. or needs albumin replacements every week, Yeah. keeps getting spontaneous bacterial peritonitis. Right. They are Keeps very on- costly to maintain. Yeah. Some people whose ascites is minimal and can be managed with a small dose of diuretic or every 6 months endoscopic evaluation for varices and a minimal Dufalec for encephalopathy are easy to manage. So the management of these patients and prevention of complications requires the services of a smart gastroenterologist/hepatologist, and the skill of the physician here has a huge role to play, along with the comorbidities of the patient. That is one thing. Second thing is the cost of the transplant procedure. So the cost of transplant procedure ranges between 15 to 25 lakhs depending upon which center you choose. So semi-government centers, they cost you around 15 lakhs roughly, and I'm talking about like UN Mehta, IKDRC, ILBS, those kind of central government funded organizations. They are trust/government hospitals type of places. And then there comes the corporate hospitals, and materials apart, different institutions have a tendency to rope in the common overhead costs. So that the manner in which institutions handle their overhead costs decides upon the tag which you end up with, and this generally is somewhere around 18 to 22 lakhs in various institutions, with give and take 2 lakhs for pre-transplant evaluation of the donor and the recipient. So, but this cost does not necessarily have to do with the quality of services, the quality of surgeons, or the quality of the medical team. It has more to do with the type of institution and how they have structured their costing and pricing policies. So this is second part of your question. The third part of your question, one more thing. For the surgery, so these packages are for straightforward transplants, and if God forbid, if they have to have these complicated post-op Recovery. events like rejection and sepsis, or prolonged critical care utilization, so each of these complications costs you somewhere between 2 to 5 lakhs depending upon the institution again. So if you have 2 of these, then it will cost you somewhere around 5 lakhs. If you have 3 of these, like 7 or 8 lakhs. So if you are somebody who is considering the requirements for a transplant for somebody in the family,
if you say 20 lakhs is the package, I would say prepare for 30 lakhs. So that you never run out of funds in the middle of the transplant. transplants. Suppose you kept 25, you still get away with it. Most institutions are very supportive in understanding the patient's conditions. Third part is post-operative. During the first year, the requirements of doing labs is a little more stringent, and the medicines are on a little higher side in terms of doses as well as the number. And so the cost combined between investigations and drugs is around 15 to 18,000 per month for the first year. The second year it drops to around 10,000 per month, and after 3 years it drops to around 5 to 7,000 per month, but it never goes below that. So I think that was a very honest answer, and we really appreciate it, because we have seen very few people being so open about answering questions related to finances, because for the patient's perspective, I think it is very important that they are ready, as you said, that if it's a package of 20, they should be at least ready with 25. Yeah. And what happens in most of our patients is when we quote 20, they'll be ready to, end up with 15 or 18 and then try to bargain, and that impacts the quality of services also at some point of time, because in the post-operative period, you have done the surgery perfectly well, or फिर patient का कुछ complication हुआ and then they run out of finances. I think the credit you have earned goes away for no reason at all except for finances. So I think a point very well taken, that you have to be prepared financially, mentally, physically, in all ways possible. And sir, at the end of this discussion, I'd like take-home messages from both experts, that what would you stress on at the end of the whole session? So, liver transplantation is a reality now in India. Previously, there were very few centers in India. Now it is available in even our home state in Gujarat. So, it is available. Everyone should have access to it. Of course, there are various caveats, including cost, but everyone should have ideally access to a liver transplant, and identifying the right patient at the right time and referring to the proper doctor is the key to the solution to the problem. I completely endorse what Dr. Iyer says, and I want to add that, like he said, it's a reality, but it is worthwhile. It has more than 90% results. It gives you a very qualitatively superior, incomparably superior lifestyle, absolutely normal lifestyle after transplant. And it is affordable, it is successful, it gives you an excellent quality of life, and there would be no reason for anybody to shy away. One more thing I would like to stress here is that we are an evolving and evolved society. We have many structures in the society, including the government, which has provisions for supporting those who are not adequately equipped in themselves to undertake such procedures. So there is a Chief Minister's Fund, there is a Prime Minister's Fund, there are various insurance schemes, there are various funding agencies available from large corporates as well as small society-based trusts, religious organizations, right, even employee associations. If you or somebody that you know needs a liver transplant, and if you're not sure whether you have the adequate resources needed, don't shy away, don't stay at home. Come forward, come to the center, ask for help. Help is available. It is available for those who ask. I'd just like to ask you, what is the youngest patient you have transplanted and what is the oldest patient you have transplanted? So the youngest we have transplanted was a 5-month-old baby who had come from Oman with a missed biliary atresia, and we did a living donor from his father to son. That is about 8 years now, doing very well. That's the youngest for 5 months. I mean, there have been younger than that, but 5 months is our youngest. And the eldest has been 74 years old gentleman who had NASH cirrhosis with HCC, and the son donated to the father. And luckily both these patients, like pediatric youngest and the elderly 74, are both alive more than 5 years now. That's great. So that's a perfectly good 5-year survival rate. From my side, the message I think I want to drive home is that both ways of transplant, a diseased transplant, so we should encourage more organ donation, and that drive should carry on. And I'm happy and privileged to say, sitting here, that Bhavnagar is one of the largest centers in Gujarat who does the organ donation program. So kudos to all the efforts made by the local specialists and
live donor transplant also should go on, because in cases where we don't have the deceased donors available, because there's a huge gap, I think. So the donors should come forward so the recipients can also have a perfectly normal quality of life. And thank you very much, sir. Thank you very much, Dr. Iyer, for being a part of this discussion. I hope this helps you all in the future. Thank you.